नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत बिसेन और आपका मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज का ये शो लेकर आया हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ, उत्साहित हूँ क्योंकि आज हमारे साथ डॉक्टर पांडे जुड़ रहे हैं लाइव। काफ़ी बिजी थे डॉक्टर साहब और काफ़ी टाइम के बाद उनको आज मैं अपने इस चैनल पे लेकर आने में कोशिश में कामयाब हो पाया हूँ। और लेकिन अच्छी बात ये है कि जो आज डॉक्टर साहब प्रेजेंटेशन देने वाले हैं दोस्तों, इट्स गोइंग टू बी अ लाइफ चेंजिंग इवेंट फॉर यू अगर आप उनकी बात ध्यान से सुने और उसको अमल करें। सो आज के शो के मेन हमारे हीरो हैं डॉक्टर पांडे, तो मैं अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए, आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए डॉक्टर पांडे को ऐड करता हूँ स्ट्रीम में। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। कैसे हैं डॉक्टर साहब? मैं अच्छा हूँ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड थैंक यू फॉर होल्डिंग दिस शो फॉर यू, फॉर द व्यूअर्स इन जनरल। आई एम हियर टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। मैं सबको ये बताऊंगा जो एक्चुअल साइंस है बिहाइंड न्यूट्रिशन। जी डॉक्टर साहब, तो आज जैसा कि आपने बोला था कि आप एक प्रेजेंटेशन लेकर आएंगे और वो जी प्रेजेंटेशन मैंने डाउनलोड किया है आपका, और मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। तो आई डोंट नो, ये मैं पहली बार कर रहा हूँ, तो देखिए आपको ये दिख रहा है डॉक्टर साहब आपको अब ये? हाँ, यस। यस। So can we jump to the first slide? I mean, just after this, let food be thy medicine, because medicines, you can either medicate a disease or you can diet a disease. So we'll be talking about dieting a disease rather than medicating a disease. We straight away go to the next slide, please. सो डॉक्टर साहब थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ये मैं पहली बार कर रहा हूँ, सो लेट्स सी। Sure. दिस इज द फर्स्ट वन। We go to the second one. ये सेकंड पे आ गया क्या? नहीं, BB first. यस, दिस इज द फर्स्ट वन डॉक्टर साहब। Yeah. So we go to the second slide. ओके, दिस इज द वन। No, I can see the same one. ये डाइजेस्टिव सिस्टम Anyway. दिखा रहा है डॉक्टर साहब मेरे पास, डाइजेस्टिव सिस्टम। मेरे पास क्यों नहीं दिखा रहा है? यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम ही दिखा रहा है डॉक्टर साहब, तो आप डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में नहीं, बोल तो सकते हैं। the first slide after the name is Om is equal to MC square. That's a very important slide. I have purposefully placed it there. Do we have it there? इस प्रेजेंटेशन में जो आपने भेजा है डॉक्टर साहब, इसमें मेरे को लग नहीं रहा कि वो वाला स्लाइड है। Okay. ठीक है। So we will start with, I'm sure people would know E is equal to MC square. जी, The highest form of science till date is E is equal to MC square. I wanted to say Om is equal to MC square. There is a reason for that. I am trying to equate spirituality with science. The highest form of spirituality known to mankind is Om. People who do not follow Sanatan might have an objection to this statement. I would clarify. अगर जोर से ओम, आमीन, एमेन अगर जोर से बोले, ब्रेन में रेजोनेंस सेम है. So जी। Om is a marker of spirituality. We are trying to equate it with science. It is one of the most difficult questions in science. What is consciousness? What is spirituality? These are difficult questions in science, not yet answered. So, if you come to the basic of it, E is equal to MC square. E stands for energy. M stands for mass. And C square is a cosmological constant. Suppose if this is a mass, if this is a mass, if it is subjected with C square of force,
it will be converted into energy. And if that energy is cooled down, it will be converted into mass. तो जो हमारे शास्त्र कहते हैं, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, उसमें क्या प्रॉब्लम है समझने में? इट्स साइंटिफिक, इट्स वेरी साइंटिफिक. जस्ट वांटेड टू पुट दिस एज अ फर्स्ट स्लाइड. थैंक यू. वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. डॉक्टर साहब, जो सेकंड स्लाइड है वो है नेचर सिग्नेचर, जिसमें आपने आमन और वो दूसरा दिखा रखा अखरोट आपने. यस, मैं अपना भी स्लाइड्स खोल लेता हूं, सो इट विल बी इजियर फॉर अस. या, सो दिस इज नेचर सिग्नेचर. नेचर सिग्नेचर करके कुछ ये भेजती है कोई चीज पे, उसको डेसिफर करना पड़ता है. जैसे अखरोट है, अखरोट एक शेल में होता है. अखरोट लुक्स लाइक अ ब्रेन. योर ब्रेन इज इनसाइड दिस शेल. नेचर, अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको टेलीफोन करके बताएगी कि हाँ भाई तुम्हारा डिमेंशिया है तो ये खाओ, तुम्हारा डिमेंशिया ठीक हो जाएगा? नो, इट विल सेंड इट विथ अ सिग्नेचर. इट इज फॉर यू टू डेसिफर. बादाम को अगर भिंगा दिया जाए, आप उसको गौर से देखिए, उसमें सारी आर्टरीज दिखती हैं, लाल कलर की होती हैं. ये नेचर का सिग्नेचर है. इट इज ट्राइंग टू एक्चुअली टेल यू कि अगर ब्लॉकेज है कहीं तो ये खाइए. इसीलिए द टॉपिक इज लेट फूड बी दाई मेडिसिन. दिस वॉज द फेवरेट वर्ड ऑफ हिपोक्रेट्स, जिसका हम ओथ लेते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन. फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन वॉज इन 250 BC और सो. उस समय ड्रग कंपनीज नहीं थी. और हिपोक्रेट्स का ये था कि आज तक कोई ऐसा पेशेंट हिपोक्रेट्स के पास गया नहीं जो क्योर होके नहीं आया. तो हाउ ही यूज्ड टू क्योर इट? ही यूज्ड टू क्योर इट मोस्टली विथ फूड, पार्टली विथ हर्ब्स, partly with other plant products and a few animal products also, but very rarely, very rarely. So that is how things started, and that is how healing started. But in the modern era, we have forgotten this statement totally. We don't consider food as medicine. I am just trying to prove this. Yes, food is your new medicine. So let's go to the next slide, please. Sure, Dr. Saab. So the next slide is, Dr. Saab, digestive system, the key to good health. Yes. Now, 1.5 साल से जब से इम्यून चल रहा है, जब से कोविड चल रहा है, लोग इम्यून की बहुत बात करते हैं, इम्यून सिस्टम की. बहुत से लोगों को बहुत आइडिया नहीं है. सो आई शुड एक्चुअली टेल देम साइंटिफिकली क्या है, कैसे. More than 70%, almost 80 to 85% of your immune system is inside your gut. So most of the antigen antibody complexes are formed in your gut, and they get deposited at various places. जैसे फूड, अगर इंसल्टिंग फूड आपने खाया तो 80 to 85% of your there is कोई एक ये कुछ अनाउंस कर रहा है. So 80 to 85% of your immune system is inside your gut. ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप कुछ भी खाते हैं, that could be an antigen, and an antibody response can be started in the gut. ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स अगर जाके वेरियस ऑर्गन्स में डिपॉजिट ये हो जाता है, उसको डिजीज प्रोसेस कहते हैं. जैसे अगर ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स लंग्स में डिपॉजिट हो गया तो हम उसको ब्रोंकियल अस्थमा बोलते हैं. ब्रेन में हो गया तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोलते हैं. जॉइंट्स में हो गया तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं. इंटेस्टाइन में रह गया तो क्रोन्स डिजीज कहते हैं. यही एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस हैं.
जो फॉर्म कहाँ हो रहा है, गट में. So what was the trigger? The trigger was your food. And what could be the cure? The cure could be your food. So it's very, very simple. And most of the chronic diseases, most nahi, almost all, nahi, I'll remove the almost also. All chronic diseases have a common minimum pathway. And the common minimum pathway starts with inflammation. So straight the message is, if you if you if you break inflammation, it is called inflames. So where is the flame coming from? The flame is coming from your cooked food. We need to understand, which is why 8.7 million species on earth. Name one more species which cooks its food. None. But I would agree to people that taste is something. Yes, for taste, there are ways of how you can satisfy your taste as well as have nutrition. In fact, that is why we are here for. We are here to tell you exactly that. So, on a broad rule, if 50% of your food is cooked and 50% uncooked, that's a very good combination of living healthy throughout life. You will not have diseases. Cooked food will take care of your taste. Uncooked food will take care of your nutrition. So both are very important, and that is how we started. So the digestive system. Yeah, can we go to the next slide, please? Sure, Dr. Saab. Yes, so next slide, Dr. Saab, भाई food cooked, uncooked, cooked में vegan, vegetarian, non-vegetarian, and uncooked में pranic and non-pranic. Yeah. So when we talk about pranayam, most of the people who think what is pranayam is breathing from the left, taking it out from the right. Yes, that is called shwasayam. Anything that promulgates prana, prana means energy, is pranayam. So your food is also a pranayam. Your breathing is also a pranayam. Your good relationship is also a pranayam. Your happiness is your pranayam. So there are many dimensions to pranayam. One of them is breathing also, which I wanted to clarify. Most of the people do not know this. Am I clear, or is there any more clarity required regarding this? So the food that you eat, the pranic foods, will promulgate pranayam, and you'll be healthy. Healthy always, healthy at that point, and healthy in the future also. Day. Yes, the next slide is sugar. Sugar addiction. I wanted to come to sugar. Yes, sugar is an addiction. All of us are sugar addicts, all without exception. You are a sugar addict, I am a recovering sugar addict. That is the only difference. All Right. of us are sugar addicts. And sugar, let me tell you, is 400 times more dangerous and more addictive than cocaine, Wow. which it says is is the highest addictive substance known to mankind. No, sugar is the first, cocaine is the second. Wow. And I didn't know the gap between sugar and cocaine is so big, 400 times into 400. Wow. So what happens is, and what has the food industry harped upon? You need glucose. All your cells need glucose. Yes, we know that. But the sugar industry knows up till there. Here is where science comes into play.
if you don't eat anything that contains glucose, will your cell get glucose? Yes, it can. Your body has the capacity to go into gluconeogenesis. Sugar industry knows up till there. Here is where science comes into play. So if you are eating protein, the body knows how to convert it into sugar. The Right. body knows everything. It is 400 times or maybe more smarter than your brain. So usually listen to your body. It tells you everything. You just have to listen to it, which usually we don't. We use our brain more. What we need to do is we need to listen to the body more. It will tell you everything. So coming back to sugar, sugar is the driver of first chronic inflammation, which is the driver of all diseases known to mankind, all chronic diseases. The second is sugar is an addiction. The third is the science, the little bit, the superficial science will tell you you need sugar. You have no option. But I just told you the science that is not known by the food industry, or they choose not to know it because it doesn't help their agenda of selling. And these people, the calorie in and the calorie out and the calorie concept of health was redundant to science maybe 15 years back, but it is still followed because that is a tool wherein we can sell things. So the food industry has caught on to it and is holding on to it. You get so many calories in this, so many calories. Okay, check your calories. You can take 150 from the cold drink also. So they have no idea, or I would say they have no idea, and I would give them then that marks to escape. I am sure they've got all the idea of whatever they are doing is not right. So here we are to tell you what is right and what should be taken here onwards. Next slide, please. जी डॉक्टर साहब. So as I told you, sugar is a driver of all diseases. The next is, you look at this slide. Is healing with frequency, This डॉक्टर साहब? is, yes, the future of medicine as I see it, as most of the science sees it, is healing with frequency, vibration, and energy. Energy healing will be the future of medicine as I see it. So look at these foods. On the right, you have sprouts. On the left, you have a fruit that is plucked. Now, fruit or any vegetable that is plucked from the mother plant जी. was live when it was attached to the mother plant. So the food that you get in the market, fruits and vegetables, have been plucked long time back. So their energy and their frequency will be less. The best part is you should have that food, plus you mix it with live food. So what is live food? Sprouts are live food. They are live food. And there's a meter which measures the electromagnetic frequency on foods. You take it and you place it near cooked food, it will be zero. The meter won't budge. If you place it near salads, it will move to some extent. If you place it near sprouts, it will go to such an extent that it will, as if it's going to break that, break the max barrier. So straight away, it is a message to you: eat energy foods for energy. If you really want energy, eat energetic foods. And sprouts are by far the best. Broccoli, yes, broccoli sprouts are better.
Gram, yes, gram sprouts are better. Moong, yes, moong sprouts are better. And moong, in America, they call it mung. It's actually moong. नेक्स्ट पे चले डॉक्टर साहब, नेक्स्ट So, स्लाइड. yeah. सो थर्मल स्कैन फॉर ऑरा. Yes. So these are thermal scans that are done to look at your aura of the body. If you have non-vegetarian food, get a thermal scan, or get only cooked food and you get a thermal scan, you will get a picture. But if you have sprouts and if you have salads, you get a picture. You see the difference in your personal aura also. So that should be enough science to tell you what should be eaten and what should be avoided. Which maybe the food industry will. There's no money in all this. There's no money in broccoli. So they will never be. They will never be telling you. If at all at some point in time they develop something that broccoli can be mixed with something and it's saleable and people are taking it just because of the broccoli part, then they will promote broccoli. So there's no money here. So they won't promote it. That is the problem. We go to the next slide. जी डॉक्टर साहब. And the next slide is plant protein. Yes. However much you didn't want to believe, we have got science to prove it, that 100 calories of broccoli and 100 calories of steak, which has more protein, because some people will be protein fans. So broccoli has 2 times more protein than steak, and that is science. Try challenging it, it'll be good. But this is what is the science we know up till now. So there's no debate. I mean, the debate over vegetarian and non-vegetarian food, which is good for you, is over. Whole food, plant-based diet is the new norm as far as nutrition is concerned. There shouldn't be any doubt whatsoever in anybody's mind. And there's no debate. The debate is over. And whole food, plant-based diet has won the debate. So the best 7 doctors that you see anywhere, I'm sure everybody knows about it. It is sunshine, water, rest, diet, as I told you, air, exercise, and the last but not the least, and a very important aspect, is empathy. Right. I will describe empathy to you. In COVID times, you are seeing so many people dying. Have you ever wondered why are they dying? They are dying because of the innate immune system of the own body. Your body is showing so much immune response that virus is getting killed, fine, but the body is getting killed. You are getting killed. Modern medicine has no way to actually keep this cytokine storm at bay except steroids. So do not blame modern medicine that it is giving steroids. They have no choice. They have to save a patient. We are trained to save first. Rest we will see later on. So it is not our fault at all. It is fault of the person's immune system. It is going berserk. So it is like a truckless driver. What is driving your T and B cells? We know science up to T and B cells. They drive your immunity. Who is the driver of T and B cells? Empathy, right, sympathy, love, compassion, daya, maya, mamta, karuna. These are missing. So the driver of T and B cells is missing. It is like a truck gone berserk without a driver.
It is high time you understood the value of this driver and instilled it in your life. And if you can do it, trust me, your immune system is going to work very fine. Try it and see. ओके, ये नेक्स्ट आपने बता दिया डॉक्टर साहब, ये 7 डॉक्टर्स का हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है लाइफ बिगिंस एंड लाइफ एंड्स। Yes. Why I showed this slide is for people, for your listeners. When life begins, our role as a radiologist begins. Ultrasound, we know life has begun. When life ends, who certifies it? If you need a documentation, we need to declare brain dead by a scan. We do a brain scan and we declare dead. So, I am there from the beginning to the end of life. We are seeing all kinds of diseases, all kinds of ailments, because most of the patient come to us, so we know exactly what, how much of the disease and what is the, because we are seeing various kind of people. One doctor sees one particular kind of patient. We see all kinds of patients. So we have a very, very fair idea of what's going on everywhere, in every field for that matter. You would have seen, if you talk to a cardiologist and you say that you have a thyroid problem, he will immediately refer you to an endocrinologist because he feels that he doesn't know endocrinology at all. So I'm here to actually sum up and look at the whole body as a whole rather than parts of the body. So that is how my interest in holistic medicine started. Right. Because we know the disease, we know what treatments patients are undergoing, we know what is the cure rate, we know how they are coming back with multiple complications. So we know the whole story behind it. That is why I wanted to show you this. And as the sperm fuses with the zygote, sperm fuses with the ovum, the zygote single cell is formed, and there's a blast of energy like sun rays. That is the blast of consciousness. Consciousness has begun. When life begins, consciousness has begun. And there's a time when consciousness ends. You might call it life force, you might call it with all kinds of names, all relate to the same thing. Okay, so we go to the next slide, please. जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे हमारे कुछ व्यूअर्स जुड़े हुए हैं और पूछ रहे हैं कि आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि प्रेजेंटेशन के बाद आप कुछ सवालों का जवाब देंगे। इज दैट राइट डॉक्टर साहब? ठीक है? यस, श्योर, वी विल क्विकली गो थ्रू ऑल ऑफ देम। या कुछ लोग जुड़े हुए हैं तो वो सवाल पूछना चाहते हैं, तो हम प्रेजेंटेशन पहले फिनिश कर लें। तो नेक्स्ट स्लाइड है डॉक्टर साहब, मेनी पीपल कंसीडर अ रॉ फूड डाइट टू बी रेडिकल। यस, you look at all the animals, all without exception eat a raw food diet, except the animals that you have corrupted, you have domesticated. Except those animals, all other animals eat raw. So going to the next slide, are you really that hungry that you're killing so many animals and eating them up? You have to actually draw a line. Where to draw a line, you have to know. The original health insurance was always plants. You give money to get your health insurance, eat plants, your health insurance is fixed. Now coming to FDA. FDA is Food and Drug Authority. It's an autonomous body. It's not a government body. It is an autonomous a body with its own rules and regulations. Now, the question that should come in mind is, why should food and drug be under one authority? As I see it, फूड से बीमार करेंगे, ड्रग से कभी ठीक नहीं होने देंगे। ताकि आप एटीएम रहें एफडीए के थ्रू आउट लाइफ। जब से पैदा हुए, जब तक मर नहीं गए, तब तक आप एटीएम है एफडीए के।
दैट इज सैड बट ट्रू डॉक्टर साहब। नेक्स्ट स्लाइड डॉक्टर साहब, द ओरिजिनल हेल्थ इंश्योरेंस आपने बोल दिया, ये डायबिटीज यस ये डॉक्टर साहब, नेक्स्ट Yes. स्लाइड। So this is the driver. The diabetes is the driver of almost, mm, if not 100%, maybe 95% of the diseases that we know. The diabetes and obesity combined together, I'm talking about. And look at the foods that we eat, and look at the kind of torsos we have these days. Now, coming to the next slide of an डॉक्टर साहब एक elephant. आप जो इंडिया में भी सैडली आजकल लोग यही खाना खाने लग गए हैं, और आई डोंट नो पीपल नो और दिस और नॉट कि यूएस इज द मोस्ट ओबीस कंट्री इन द वर्ल्ड, मोस्ट ओबीस, एंड ऑस्ट्रेलिया इज नंबर 2। सो एफडीए ये मुझे लगता है गुड फॉर यू। that is that question should be asked by you yourself to you yourself, and answered by you yourself, because then only you will get to know however much the human psychology is. आपको जिस काम के लिए मना किया जाएगा, प्रत्यक्ष या परोक्ष, आप करोगे जरूर। तो इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। सॉरी, या बोलिए। Next slide, Dr. Saab, the nutritionally blind doctors and their understanding of diseases. Yes. What happens is, if blind people को आप एक एलिफेंट दे दो, जो उसका सूंड पकड़ा हुआ है उसको लगेगा नहीं the elephant is like a snake. जो उसका पैर पकड़ा है वो बोलेगा नहीं नहीं, एलिफेंट इज लाइक अ पिलर. जो उसका पेट पकड़ा है वो बोलेगा नो, एलिफेंट इज वेरी रफ लाइक द स्किन. जो उसका पूंछ पकड़ा है वो बोलेगा नो, एलिफेंट इज लाइक अ रोप. They are talking about the same animal from different angles. We need to understand that the disease process is a whole. It affects all organs. हार्ट में कोई डिजीज है तो किडनी नॉर्मल रहेगी, इसकी संभावना बहुत कम है. The test that we do for the kidneys might be normal. That doesn't mean the kidney is normal, by the way. So there are markers. The intelligent doctor would always see through it and understand. So if you have got the knowledge of nutrition, which sadly there is a knowledge gap as far as nutrition is concerned, because in modern medicine we are not trained in nutrition. Whatever I know, I have known through my interest and through my voracious reading habits. That is how I know. Yeah, so going to the next slide. मैं कुछ Ajit, I should be asking you. वेस्टर्न मेडिसिन जो Sure. है, ये एक कुछ मैं ऐड करना चाहूंगा डॉक्टर साहब इसी बात पे, कि जो वेस्टर्न मेडिसिन है बेसिकली वो हमारे बॉडी को एज ए कार ट्रीट करती है, कि जैसे कार में इंजन खराब हो गया तो इंजन रिप्लेस कर दिया, टायर खराब हो गया तो टायर रिप्लेस कर दिए. जबकि हमारी बॉडी एक होलिस्टिक सिस्टम है, एक दूसरे से सारे पार्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. एक जगह पे कुछ प्रॉब्लम होगी तो बाकी जगह पे भी वो प्रॉब्लम होएगी. तो वेस्टर्न मेडिसिन में मेरे को जो प्रॉब्लम दिखती है कि वो सिर्फ आपके सिम्टम्स को मैनेज करते हैं, क्योर भी नहीं करते हैं, और बॉडी को एक कार की तरह ट्रीट करते हैं. जबकि हमारे होलिस्टिक सिस्टम में बॉडी पूरा एक होलिस्टिक सिस्टम है और उसको एज अ होलसम ट्रीट किया जाता है. एक प्रॉब्लम है तो उसके साथ कुछ और भी प्रॉब्लम जुड़ सकती है, वो नहीं करते ये लोग. ये मेरा अपना पर्सनल ये मानना है डॉक्टर साहब. Yes, you are very right. और दूसरी बात डॉक्टर साहब, जो न्यूट्रिशन की भी आपने बात की, तो आपने तो एमबीबीएस एमडी किया है डॉक्टर साहब, और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मतलब कितना पढ़ाते हैं न्यूट्रिशन डॉक्टर साहब एमबीबीएस एमडी को. जबकि हमारा हिपोक्रेटिस जो आपने सबसे पहली बात बोली थी, लेट फूड बी द मेडिसिन, जो हिपोक्रेटिस ने बोला था, उसका बेसिस ही यही था कि खाने से ही सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं. और मतलब आयरनी ये है कि आज के मॉडर्न मेडिसिन को बोलते हैं जिसको, उसमें फूड का न्यूट्रिशन का कितना, मतलब आप बताएं, आपने पढ़ाई की है, कि कितना पढ़ाते हैं, ये बताइए डॉक्टर साहब. नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ाते, कुछ भी नहीं. So how, the nutrition that we know is, we are nutritionally blind. That's why. As far as our curriculum is concerned. और हमें लगता है कि न्यूट्रिशन से क्या होगा.
We take it that way and we look at nutritionists. और ठीक है, तुमको ये सब पूछना है, तुम न्यूट्रिशनिस्ट के पास चले जाओ. Nutritionist, there is another gap. Nutritionist, all nutrition colleges or schools in the whole world are run by the food industry. Yep. So you can very well imagine what is revealed and what is concealed, you would know. So their knowledge of nutrition is what is revealed to them. It is not their fault. It is not people's fault. It is the deep state that is actually doing things like that to actually sell. But अभी मैं इसमें I was सॉरी सर बोलिए आप. I was looking at economics. अमेरिका का ही अगर ले लिया जाए तो जितना वो इनका हॉस्पिटल के बिल्स ये भरने पड़ रहे हैं गवर्नमेंट को थ्रू इंश्योरेंस एंड थ्रू थिंग्स लाइक दैट, और जितना इनको इनकम आ रहा है फूड एंड ड्रग इंडस्ट्री से, ये सस्टेनेबल नहीं है. दिस बर्डन इज इंक्रीजिंग एंड दिस इज ऑलमोस्ट रिमेनिंग द सेम और increasing little bit. So it is not sustainable. It has to crash someday or the other. आज नहीं तो कल crash करेगा ये. Is how I see it. The best food is, see, health is 180 degrees opposite to what we have been conned to believe. What is the best food? The best food is fasting. And we are stuck up with, okay, this is good, that is good. The best food is fasting. In Sanskrit we call it langan. आप एक दिन लांग लीजिए, आपकी बीमारियां ठीक हो. We have to learn so many things from animals. What we have learned is not enough. We have to learn so many things from animals. जानवर बीमार पड़ता है, खाना छोड़ दे, पहला काम करता है खाना छोड़ देता है. It is a matter of observation. बट डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि हमारे यहाँ जब लोग बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाके पूछते हैं, डॉक्टर साहब मैं बीमार हो गया हूँ, मैं खाऊं क्या आप? वो फास्टिंग में भी पूछते हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना है. मतलब दे आर जस्ट, पेट में पता नहीं महिषासुर घुस गया है. Did you know, Ajit, that 70% of the GDP of the world, 70% is food and drug industry? Can you imagine? मतलब we have so much, मतलब we are, and this 70% is managed by a few dozen CEOs. Wow. Yep. 70% of the world GDP. So imagine where we are and what are we up to and what are we doing. This is what it is. जी, नेक्स्ट स्लाइड है डॉक्टर साहब. कोरोनरी हार्ट डिजीज का शायद आपने दिखाया है कि रिवर्स हुआ है 96 to 99. फूड से कैसे, यस, फूड से कैसे रिवर्स होता है. ये आपका अपना केस है डॉक्टर साहब? नहीं, अपना केस नहीं, ये बोरोड स्लाइड है जी. ये एक डॉक्टर एसएल स्टीन है, मेरे फ्रेंड हैं यूएस में जी. एंड डॉक्टर एसएल स्टीन इज द कार्डियोलॉजिस्ट फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस, एंड ही इज a naturalist, and he has reversed this with food only. I borrowed this slide from him. Yes, so this is possible, and we can actually produce an image and actually show you, because लोगों को ना proof चाहिए होता है. So we've got enough proof, ample proof. We straight away, and we should come to the cholesterol slide straight. Cholesterol high. Are you there? Hello? सॉरी, मैं म्यूट था डॉक्टर साहब, जस्ट अ सेकंड. मैं म्यूट. हाँ डॉक्टर साहब, ये नेक्स्ट स्लाइड तो ये ब्लॉकेज का है, ब्लॉकेजेस. हाँ, ब्लॉकेज ठीक हो गया है. वो ब्लॉकेजेस स्किप करके लेट्स गो टू द कोलेस्ट्रॉल स्लाइड, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई वांटेड टू. ये आगे डॉक्टर साहब, कोलेस्ट्रॉल हाई. कोलेस्ट्रॉल. Yes, I wanted to actually tell you, cholesterol is a big game of the drug industry. Or cholesterol, your 80% of your brain is cholesterol.
अगर आपने एंटी कोलेस्ट्रॉल दे दिया, तो अगर 10 साल में डिमेंशिया हो जा रहा है, व्हाई आर यू सरप्राइज्ड? व्हाई आर यू सरप्राइज्ड? आपने कोलेस्ट्रॉल रोक दिया है, व्हाई आर यू सरप्राइज्ड विद डिमेंशिया? तो डिमेंशिया के लिए एक और ड्रग, कोलेस्ट्रॉल के लिए तो पहले ले ही रहे थे, वो चल ही रहा है। डिमेंशिया के लिए एक और ड्रग। इसलिए मैं ये बोल रहा था, फूड से बीमार करेंगे, ड्रग से कभी ठीक नहीं होने देंगे। आर यू देयर और स्टिल ऑन म्यूट? यस डॉक्टर साहब, मैं अपना म्यूट कर देता हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई वो हो रहा है, इको हो रहा है। जस्ट अ सेकंड डॉक्टर साहब। ओके। एंटीऑक्सीडेंट्स, कार्बन रिच फूड। Yes. So, and yes, antioxidants is an important slide which I wanted to bring it here. Antioxidant. Most of the people do not know what is antioxidant. Ajit, can you tell me what is your idea about an antioxidant? मेरा एग्जाम मत लीजिए डॉक्टर साहब। एंटीऑक्सीडेंट सुन के नहीं ऑक्सीडाइजेशन होगा लगता डॉक्टर है साहब? एंटीऑक्सीजन? जी वो मेरा जहाँ तक लिमिटेड एंटीऑक्सीजन। नॉलेज है डॉक्टर साहब। जी आप ही बताइए जी। एंटीऑक्सीडेंट सुन के एंटीऑक्सीजन टाइप नहीं लगता है, और ऑक्सीजन के लिए इतनी मारामारी चल रही है, तो लोग जी बोलेंगे नहीं एंटीऑक्सीडेंट क्यों लेना है, हम तो ऑक्सीजन लेने के चक्कर में है ना? सो जी एंटी ऑक्सीडेंट जो है एक्चुअली एंटीऑक्सीजन का, ऑक्सीजन इज कंबस्टिबल बाय द वे। ऑक्सीजन इज द ड्राइवर ऑफ इन्फ्लेमेशन। ऑक्सीजन आग लगाता है। So the excess breathing that we do, the excess oxygen that we have needs to be taken out of the body, otherwise it will burn your body. This is taken out by carbon rich foods which go in, combine with this oxygen and take it out. That is why carbon rich foods are called antioxidants. We go to the next slide, please. I just wanted to clear a few things before we go in the question answer session. जी नेक्स्ट स्लाइड है डॉक्टर साहब, क्रोनिक स्ट्रेस। It is one of the biggest killers of mankind today, and your thoughts influence each and every cell of your body. This is proved scientifically. As and when questions come, we can take it up from there. जी डॉक्टर And साहब, लोग लाइन में हैं डॉक्टर साहब, तो इसको खत्म करते हैं या ठीक है। योर And थॉट्स अफेक्ट योर सेल्स। yes, so we stop here and then we take question answers from people. अभी आप अपना Or करिए फिनिश डॉक्टर you साहब, can शेयर कर sum it देता हूँ up. अपना ये लिंक। आई विल कनेक्ट पीपल टू द लाइव स्ट्रीम एंड दे कैन आस्क क्वेश्चंस। तो अपना ये पूरा कर लीजिए आप अपना प्रेजेंटेशन। ये just one or two not very important slides, but what I would want your viewers to know is, if it is there in mind to become healthy and to be disease free, it's possible without drugs. And who's preventing it? You yourself. Your biggest enemy or your biggest hindrance in life is you yourself. It's in your mind. I can't do it. This is your biggest enemy. You can do it. So we finish with this and we start taking questions. एक सेकंड डॉक्टर साहब, मेरे को थोड़ा भी शेयर कर रहा हूँ मैं ये। सो जो लोग वेट कर रहे थे, शशांक जी अपना शुरू से लेके जो अपना राव साहब, मिस्टर आर के सिंह, आई एम शोइंग माई दिस इज द यूआरएल। अपना टाइप करके आप यहाँ पे आइए और जुड़िए यहाँ पे, और मैं आपको यहाँ पे लाइव आपको डॉक्टर पांडे से आपकी बात कराता हूँ। तब तक डॉक्टर साहब नेक्स्ट स्लाइड, कैंसर मेटाबॉलिज्म इज डिफरेंट, शुगर और ये, तब तक इस पे आप कर लीजिए डॉक्टर साहब, लोग आ रहे हैं लाइव। अच्छा, और एक और बात मैं बोलना चाह रहा था। What do you feel is the purpose of any education for that matter? What is the purpose of education? The purpose of education, according to my limited knowledge, is to know the nature of reality.
जी your nature of a reality, your perception of the nature of a reality, my perception of the nature of a reality could be the same, could be different. आपको नदी नजर आती है, मुझे गंगा मां नजर आती है, किसका नेचर ऑफ रियलिटी बेटर हुआ? मैं डॉक्टर साहब थोड़ा लोगों को ज्वाइन कर रहा हूँ, तो आप प्लीज कंटिन्यू करें। तो दैट इज हाउ एजुकेशन का पर्पस जॉब करना नहीं होना चाहिए। एजुकेशन का पर्पस यही होना चाहिए, टू नो द नेचर ऑफ रियलिटी, एंड आई एम हियर एग्जैक्टली फॉर दैट, एंड आई एम हियर टू हेल्प योर पीपल, माय ओन पीपल, फॉर टू डू whatever is best for them. Yes, you can start your questions. एक डॉक्टर साहब किसी ने क्वेश्चन पूछा था, अभी कोई लोग जुड़ नहीं पाए हैं, एक सेकंड। ओके डॉक्टर साहब, तो मैं एक ये डॉक्टर साहब क्वेश्चन है स्क्रीन पे, ये मैत्री ने पूछा है, सर आई हैव read about 80-20 rule, 80% nutrition, 20% exercise, but many people eat unhealthy food and keep exercising. How far does food affect the body? Does it contribute more towards health as to exercise? Well, people who exercise, mostly the exercise is more, food becomes a motivation that you should get a reward. That is what we have been always said, that you do this and you get this a reward. So if you exercise, you can have this food. That is a reward that we give to ourselves, which is not right. You don't have the, even if you exercise, you don't have the license to eat anything that you want. I mean, that's not right as far as health is concerned. That is why even after exercising, see, the gap in understanding is, अगर च्यवनप्राश खाके कोरोना से बच जाते या इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती, तो अक्षय कुमार को कोरोना नहीं होता। और अगर एक्सरसाइज करके हेल्थ ठीक रहता तो सौरव गांगुली को हार्ट अटैक नहीं होता। ये दोनों एग्जांपल्स अभी के अभी आपके सामने हैं, ये दोनों एग्जांपल्स। सो वी नीड टू एक्चुअली put science behind everything to understand with clarity what it is, how it is, and how much. Did I answer this question? Because this was the 80-20 rule. I don't think that is correct. It could be correct in a particular setting, a particular window, the window of exercise and the window of food. Yes, it can be taken, but beyond that window, maybe it doesn't work. यस डॉक्टर साहब, ये आ गया उनका जवाब कि थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। और हमारे साथ डॉक्टर साहब शशांक जी जुड़ गए हैं लाइव स्ट्रीम पे, और मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ, वो सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। और मैं फिर से ही बताना चाहूँगा कि ये हम कोई मेडिकल एडवाइस नहीं देते हैं, दिस इज़ फॉर जस्ट जनरल नॉलेज। मेरा चैनल नहीं है, डॉक्टर पांडे हैं मेडिकल प्रोफेशनल, मैं सिर्फ अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। सो शशांक जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए डॉक्टर पांडे से। शशांक जी, अपने आप को अनम्यूट करिए और पूछिए क्वेश्चन। शशांक जी, कैन यू, Yes. आपको सुनाई दे रहा है? शशांक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप एक सेकंड। आप अपना म्यूट आपने किया शशांक जी, अपना अनम्यूट करिए शशांक जी। ओके आपने अपने आप, यस, आप पूछिए। हाँ जी। हेलो। हाँ, एक्चुअली डॉक्टर साहब, मेरे फादर को स्टेज 4 भी ओरल कैंसर हुआ है, तो उनका सर्जरी हो गया है। अभी कीमोथेरेपी और रेडिएशन साथ में चालू कर रहे हैं, तो प्रोसीड करना चाहिए कि नहीं? ये जितना सिंपली आपने पूछ दिया, आई
respect your sentiments for your father, उतना simple नहीं है ये answer करना. We need to know what is the actual condition, what is the stage, and what best can be done about it. What you can do is offline, you can send me a WhatsApp message, and you can send all the details. I'll definitely respond to you. And Oh, if you have Ajit's number, he will share my WhatsApp number with you, and you can actually share your problems with me, and okay. I will definitely try to help you and give you the best answer possible. But since you have asked a question, this is for all cancer patients. I think I should let you know. You love candy, you love sweets, you love sugar. Cancer also loves sugar. So if Okay. you want to starve cancer to death, you have to starve sugar. It is not rocket science to understand this. The PET scan that we do, how do we do it? We do it with fluorodeoxyglucose. It's a radioactive glucose. And where is it taken up? It is taken up straight by the cancer cells. So this is proof enough to tell you that cancer loves sugar. Okay, डॉक्टर. And सभी you have to कैंसर cut के it लिए क्या out डॉक्टर? to actually cure it. Yes, Okay. yes, without डॉक्टर, exception. is it for all cancers or only मैं one? यही तो आपको बोल रहा हूं कि yes, all cancers. Common minimum pathway sugar ही है. And let me tell you, salt से उतना blood pressure नहीं होता है जितना sugar से होता है. आपको सुन के मालूम नहीं कैसा लगेगा. I can prove it to you scientifically कि salt से उतना sugar नहीं होता है जितना उतना blood pressure नहीं होता है जितना sugar से होता है. We are restricting salt. Salt कम खाओ. ये we need to restrict sugar. I'll tell you how. ये मतलब ये किसी का question हो भी सकता है. Sugar, what it does is it makes insulin come out of pancreas. This insulin retains sodium from the kidneys. So whatever little salt you eat will be retained by the body because of insulin. And why did insulin come? Because of sugar. It's very simple. So the salt is not causing a problem, the sugar is. And that is science. Just wanted to let you know. Ji. हो गया Next शशांक आपका question. Okay, सवाल? doctor, just one question is there, only just one question. Okay. Sorry, Yeah. sir, but all. Actually, जी जी. doctor, every lump should be checked if it's cancer. Sometimes misdiagnose it, and after some time it can get converted to cancer or something. इसमें आपका जो कंफ्यूजन है ये काफी लोगों का होगा. So I'll give a detailed answer for this. This is a very good question. जब से आप सो के उठते हैं जब तक आप सो नहीं जाते हैं, इतनी ही जिंदगी है ना. क्योंकि Yes. at the time you sleep, you are dead. You are asleep, you are dead comes to the same thing. तो जब आप सो के उठते हैं जब तक सो नहीं जाते हैं, इतनी ही जिंदगी है. इसी एक दिन को जीवन में प्रोमलगेट करें तो जीवन बन जाता है. बट द यूनिट ऑफ दैट इज from the time you got up till the time you slept. That is the unit of your life. Within this time, whatever you do, even if a thought comes to your mind, it creates an acid. If you exercise, it creates lactic acid. If you eat, it creates gastric acid. So in a nutshell, anything that you do creates an acid. This acid needs to come out of the body. There are only 4 channels the body has to take out acid: respiration, perspiration, urination, and defecation. There is no 5th channel. I'll repeat for you. Respiration, deep, because if you are doing superficial respiration, you are creating acid. So that is why deep breathing is called alkaline breathing. Respiration, perspiration. Perspiration means pasina aana. Urination and defecation. यही 4 तरीके हैं बॉडी के पास. अगर इसके बाद भी आपका एसिड नहीं निकला और आपका इंसल्ट जारी है, ये खाने से या कुछ और करने से एसिड बन रहा है, the body gets overwhelmed
एंड इस एसिड को इकट्ठा करके कहीं ना कहीं भेजती है। अगर गॉल ब्लैडर में फेंक दिया तो वहां स्टोन बन गया, अगर किडनी में भेज दिया तो वहां स्टोन बन गया, अगर ब्रेस्ट में फेंक दिया लंप बन गया, उस लंप में ब्लड सप्लाई शुरू हो गया, कैंसर बन गया। सो एनीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम zip your lips, things will be fine with you. If you don't, be prepared for everything on earth. तो आपका lump का question I think I have answered. So all lumps are not cancer, but when angiogenesis in the lump starts, it could become cancerous. Angiogenesis, so you have the foods which cut down angiogenesis, which create angiogenesis, because अगर किसी को हार्ट में ब्लॉकेज है उसको एंजियोजेनेसिस चाहिए, तो एंजियोजेनेसिस के लिए फूड्स हैं, एंजियोजेनेसिस कट करने के लिए फूड्स हैं. सो देयर आर फूड्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दैट यू कैन डू विदाउट ड्रग्स. यू कैन चेक ऑन द नेट एंजियोजेनेसिस के लिए क्या फूड है, एंजियोलाइसिस के लिए क्या क्या फूड्स हैं. टोमेटो फॉर एग्जाम्पल, the little nutrition that we know about tomato is tomato causes kidney stones. The drug industry would like you to believe that. Tomato has lycopene. It is angiolytic. Cancer prevent करती है. It's very good for you. Yes, can we go to the next question, Ajit? Am I audible? मैं अपने आप को म्यूट रखता हूँ डॉक्टर साहब, आप ऑडिबल हैं. वो शशांक जी का हो गया क्वेश्चन. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लोग कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पर हो नहीं पा रहा है. कुछ लोग क्वेश्चन यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं. जो आपने अभी एक बात बोली ना डॉक्टर साहब की टमाटो से बीज से वो कैंसर होता है, वो एक बड़े फेमस डॉक्टर हैं वहाँ पे यूएस में. वो अपना मतलब बिजनेस इसी से चलाते हैं, लोगों को डरा के कि टमाटो के बीज से कैंसर होता है. तो मैं उनका भी नाम नहीं लूंगा, बहुत फेमस है और बहुत मतलब चलिए वो फिर से किसी दिन बात करेंगे. अभी कुछ लोग क्वेश्चन पूछे डॉक्टर साहब. एक मिस्टर रामाचंद्र राव हैं जो कि जुड़ नहीं पा रहे हैं. सो उन्होंने क्वेश्चन पूछा डॉक्टर साहब, आपके स्क्रीन पर है. मिस्टर राव पूछ रहे हैं, सर आई एम हैविंग हाई लेवल ऑफ क्रेटिनिन ऑफ 4 एंड माय किडनीज आर श्रंकन, हाउ टू रिवर्स दिस डिजीज. मिस्टर राव के पास मेरा नंबर भी है बिकॉज ही हैड कॉन्टेक्टेड मी, बट उन्होंने मैं उनको आंसर करूंगा. यस, इट्स पॉसिबल सर. द किडनी साइज विल कम बैक टू नॉर्मल, वी कैन नॉट से फॉर श्योर, बट जितना भी साइज बच गया है लाइफ में उसके निफ्रॉन्स इसके आगे और डेथ नहीं होगा और डिटोरेट नहीं करेगा. ये चीजें पॉसिबल हैं एक्चुअली. However much you have been conned to believe otherwise, that it's a chronic progressive disease. So the insults that have produced this renal failure, try to barge on those insults. Mostly diabetes or blood pressure hota hai. So if you can control this, you can control the deterioration of the kidney function so that it will not land up in an end stage renal disease. That should be the goal of your goal at this point in time. And you have my number. You can always message me for further details. But diabetes and blood pressure, I'll take this opportunity to tell your viewers also. Diabetes and blood pressure are highways on which diseases travel to get affected. ये हाईवे तोड़ना पड़ेगा. And you thought that both are chronic progressive diseases? No, they are fully curable. They are fully curable. जी. Which means आप बहुत आराम से ये हाईवे तोड़ सकते हैं.
2-3 लोग ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर साहब, पर उनका डिवाइसेस नॉट कनेक्टेड करके दिखा रहा है। एक सेकेंड डॉक्टर साहब, ये शशांक जी फिर से जुड़ना चाहते हैं, रुकिए मैं देखता हूँ, फिर से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्या है। शशांक जी गए? आप उन्हीं का क्वेश्चन ले लीजिए, क्योंकि वो कई क्वेश्चन जो होंगे, बहुत लोगों के बहुत सिमिलर क्वेश्चंस होंगे, सो इट विल एड्रेस इट। ओके डॉक्टर साहब, अपना गुरदीप सिंह जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब, आर मिलेट्स गुड फॉर आवर बॉडी? ऑल सीड्स आर गुड फॉर यू, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू ईट देम। आपने कभी गौर किया है, हम सीड्स खाते हैं? दाल क्या है? सीड है। चावल क्या है? सीड है। रोटी क्या है? सीड है। हम जिस तरीके से खाते हैं सीड को, शायद वो ठीक नहीं है। सीड हैज द पोटेंशियल एनर्जी टू बिकम अ ट्री, हमें ये पता है, लेकिन हम कैसे खाते हैं? 2 साल उसको वेट करते हैं, 2 साल पुराना राइस, उसके बाद उसको पकाते हैं, उसको एक पर्टिकुलर तरीके से। सो वी हैव ओनली दिस मच स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाट अ सीड कैन डू। इसके बियॉन्ड स्पेक्ट्रम में जाइए, आप सीड को ज्यादातर स्प्राउट करके खाइए। आप देखिए, कोई भी सीड, नॉट ओनली मिलेट, ऑल सीड्स आर वेरी गुड फॉर यू। यूज स्प्राउट्स, दैट्स अ बेटर फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन ऑलमोस्ट ऑलवेज। एंड अगर कोई कैंसर और एज और सारा कुछ रिवर्स करना चाहता है, दिस इज द बेस्ट फूड दैट कैन बी। जितनी ज्यादा मात्रा में लें, आपके लिए उतना ही अच्छा है। थैंक यू डॉक्टर साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, आई डोंट थिंक कि आप इसको, आई डोंट नो, ये मिस्टर आर के सिंह थे, अभी ऑफलाइन है। प्लीज डिस्कस विद डॉक्टर सर अबाउट क्योर फॉर स्किज़ोफ्रेनिया। Okay, so mind diseases. When we say schizophrenia, we talk about mind diseases, from simple forgetfulness to overt dementia, the whole spectrum. We'll call it dementia. Why? Because we look at the diseases that way, and that is how a disease progress from simple forgetfulness to total dementia. Schizophrenia comes in between somewhere. In this whole spectrum, we need to understand that where is the mind? The mind is not in the brain, please. We had this misconception. We need to clear it out. Brain can be divided into 3 parts: the anatomy of the brain, the physiology of the brain, and the biochemistry of the brain. Anatomy of the brain usually is normal in all kinds of dementia, but still we get an MRI done. There is nothing wrong with anatomy of the brain, and anatomy of a living brain and anatomy of a dead brain, both are same. So what is wrong is the function of the brain. What is wrong is the biochemistry of the brain. But we have limited tools to actually measure that. Now, with the advent of what I do specifically, I do PET scans and I do gamma scans for brain spect, we call it. We do functional imaging of the brain. Like suppose at this point in time, I am focusing somewhere. Which part of the brain is more active? That will take up more glucose. So we do FDG scans and we can actually pinpoint, okay, this part is more active. If it is not active, because till date, our understanding of the brain and neurosciences, I would call it very, very minimal till now. Till date, as we speak, it's very minimal.
Very recently, we discovered a glymphatic system. That was a lymphatic system of the brain. Recently, we discovered a rosebud neuron. That is a neuron of the brain without going into details. So, our understanding of the anatomy, the physiology, and the biochemistry of the brain is not direct, it is always indirect. If some part is injured, what is the functional loss? Then we calculate. But thankfully, this is an era of we understand now there's something called neuroplasticity. So even if half of your brain is taken out, the rest half can actually grow back and all your functions will be normal. That's possible. That's possible scientifically. It might be easier said than done, but it's possible. It's जी possible. डॉक्टर And साहब what is possible can be achieved. Jay. जी Schizophrenia is fully curable if you understand the basis of it will not be cured by drugs. Please. We need to understand this. Your brain functions on four hormones mostly. These four happy hormones, they are called serotonin, oxytocin, and stuff like that. All this is made in your gut, and there is a gut brain axis. So, your food determines what is your thought process, how you are thinking, how demented you are, which is why Alzheimer's disease these days is called type 3 diabetes mellitus. It's called because of that. So your food determines what your thought process will be and what your diseases from forgetfulness to total dementia could be. Schizophrenia comes somewhere in between, and that can be seen and that can be cured with food and a little bit of lifestyle changes. जी डॉक्टर साहब नेक्स्ट Hmm. नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर साहब शुभम माथुर जी ने पूछा है डॉक्टर साहब आई हैव टू क्वेश्चंस टू Hmm. आस्क फर्स्ट प्लीज टेल डॉक्टर साहब टू टेल सम important things on his research on pineal gland and the second question is please ask him about the fluoride which affects our thinking process so Pineal pineal gland gland is the only gland in the brain which is just one. Rest there are two. Two cerebrums, two cerebellums, anterior and posterior pituitary. All are two except the pineal gland. It is one, which is why it is associated. If you look at ancient cultures also, Advait, non-duality, all these are similar words. Non-dual means आप दो आंखों से क्या देखते हैं? सुख दुख अच्छा बुरा. आपको सुख दुख के ऊपर उठना पड़ेगा आनंद के लिए. This might sound a very philosophical statement, but that is what non-duality is all about. It is not dual. सुख में भी आपके भाव वही हो जो दुख में हो. So that is the level of what pineal gland is. एक तरह से देखा जाए तो वो restart button है brain का. If you can actually activate your pineal gland, you would know how to start and stop your body whenever you want to. It's a very mysterious gland. In modern medicine, it is called a vestigial organ. I don't think it is vestigial. I'm doing a PhD on that, so we'll see what results come. But as of now, we need to unblock the pineal gland. The stage 4 cancer patients that I'm taking up and I'm trying to stabilize their disease just by metabolism, just by eating right. And most of them are stabilizing their diseases. What we observe is when they come to us, their pineal gland is calcified. As they get better, the calcification keeps on decreasing. So I have incorporated this in the thesis that I'm writing, and we are still on it. And there are fluorides which actually poison the pineal gland and poison the brain as such. They are toxic substances.
and it's called a neurotoxin. And fluoride, why do we use it? 2 बार ब्रश करना क्यों जरूरी है? दांत व्हाइट होने के लिए? क्या दिखाना है? दांत व्हाइट लेके मर जाना है? और दांत व्हाइट हो जाता है फ्लोराइड से, ऐसा कोई साइंटिफिक पेपर अभी तक पब्लिश नहीं हुआ. तो डॉक्टर साहब, So I दिखता तो है still ना don't know ये what is पे? the purpose of adding I still don't know what is the purpose of adding fluoride to toothpaste and drinking water. I do not know, because fluoride का जो इतिहास रहा है, इतिहास कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है. I will just take this opportunity to tell your viewers इतिहास क्या है फ्लोराइड का. बहुत ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है. हिटलर, बहुत ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है. इतिहास में ये टाइम स्केल को मिनिस्क्यूल माना जाता है. हिटलर के मान लो 10,000 अगर उसके सोल्जर्स थे, तो 40,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे. मतलब प्रिजनर्स ऑफ वॉर वर मोर. अगर ये लोग जुड़ जाते तो हिटलर को ही मार सकते थे, उसकी आर्मी को मार सकते थे. उसके प्रिजनर्स ऑफ वॉर उसको प्यार करते थे. कैसे? उसने ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर दिया? वो उनके पानी के टैंक के बगल में फ्लोराइड का टैंक रखा हुआ था. उनको मिला मिला के ये पानी देता था. यू बिकम अ स्लेव. सुबह उठो, ब्रेकफास्ट खाओ, शिथिल हो जाओ. दोपहर को फिर भूख लगेगी, लंच खाओ, शिथिल हो जाओ. रात को डिनर खाओ, सो जाओ. तुम लोग सोते रहो, मुझे अपना काम करने दो. दैट इज वाई फ्लोराइड वॉज मिक्स्ड. यू बिकम अ स्लेव एक्चुअली. तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो फ्लोराइड 2 बार ब्रश करने के लिए बोला जा रहा है, ये कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी की तरफ पॉइंट कर रहा है. I have no idea. I am just thinking. It's my thought process. ओके डॉक्टर साहब, कई क्वेश्चंस हैं, सो लेट्स फिनिश, क्योंकि 1.5 आवर पे एटलीस्ट हम इसको फिनिश कर दें. 15 मिनट रह गए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, हेल्दी लाइफस्टाइल इंडिया. इनका क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, हेलो जीत जी, डॉक्टर पांडे साहब. डॉक्टर साहब, शुड वी गो मोर फॉर रॉ फूड, एंड व्हाट आर द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ कंजम्पशन ऑफ कुक्ड फूड? So any cooked food will give you inflammation. The chronic inflammation, the driver of all the common minimum pathway for all chronic diseases is chronic inflammation. So chronic inflammation mostly comes from your cooked food. If you want to lower chronic inflammation, it is not druggable, it is dietable. There are a few things that can be taken out with drugs. There are a few things that are not druggable. Chronic inflammation is throughout the body, each and every cell. That is not druggable. It is dietable. So what I feel is, अगर आप uncooked food ज्यादा मात्रा में लेते हो, वो आपका chronic inflammation को कम करता है. So that is the best part. इसलिए मैंने beginning में ही बोला था, there has to be a balance. The good balance for an average person should be 50% of whatever you consume should be cooked, 50% uncooked. The cooked for taste, the uncooked for nutrition. Next question, And Dr. health. Saab. Sorry, yes. Next question, Dr. Saab. Triple A to triple Z vocabulary. ये पूछ रही हैं GM Ajit Ji and Dr. Sahab. Does a person need to have food as per the dosha? That is Vat, Pitt, Kaph. Does it affect a person's body? Is it required to do a bit of experimenting to see what works for us? Yes, she's very right. One size fits all. ये संभव नहीं है. I am giving you a general guideline. This needs to be extrapolated to each person to suit his or her environment. And Vat, Pitt, Kaph is one of the best ways known to mankind to actually understand what a person is, what his background is, what his body type is, and how to take it forward. I'm very impressed with this question. If she's an Ayurvedic doctor, my salute to her.
and if she is not, two salutes for her, because very few people know this actually, and I don't know Dr. it's a whether very good way. सॉरी डॉक्टर साहब, I don't know whether it's he or she because मैं usually जब कोई नहीं देता तो मैं उसको she ही बोलता हूँ. So अच्छा, it's तो yeah. in either case, this is the best way how individuals can be categorized as to what suits them, what does not suit them, according to their Vat, Pitta, and Kapha, which is beyond the scope of our discussion here. But I am intrigued by this question, and I would like to answer it fully if asked to me personally on my personal window. जी. Next question. Yeah. Okay. एक second. I can give you a number for WhatsApp if you don't, if your viewers don't call and just send a message. Because please don't call on that number. You can message me. I will definitely respond to your message. Sure, Dr. Because on that, it's not only me. My whole secretariat works on that number. So please don't call. You can message on that number 98150 9999. You can message your problems. Yeah. Okay, Dr. Sahab, next question है Matri. She is saying, sir, have read about 80-20% rule, 80% nutrition, 20% exercise. एक ले लिया था हमने क्वेश्चन डॉक्टर साहब. ये ले लिया था ना मैं क्वेश्चन. जी. तो अभी नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर साहब. शशांक जी के क्वेश्चन आपने ले लिए थे लाइव, और आपने कहा था रामचंद्र राव जी का भी आपने क्वेश्चन ले लिया था. I think he's in direct touch with you. Yes. He has messaged me and I have messaged him back. And if there are other things that he wants to ask, he can send a message and I'll try to respond to him. ये शुभम माथुर जी कह रहे हैं, I use haldi for my teeth and neem as well from 2 years from now. बहुत अच्छी बात. So I don't think ये कोई क्वेश्चन है. ये अच्छी बात है. एक ज्योत्सना जी ने क्वेश्चन पूछा था, I'm trying to find out. ये रहा. ज्योत्सना जी ने क्वेश्चन पूछा डॉक्टर साहब. वो पूछ रही हैं, is there a way to know one has cancer before it's too late? Yes, there are ways. And let me surprise you by telling that almost every 1.5 से 2 महीने पे हर एक इंसान को ऑलमोस्ट एक कैंसर हो जाता है. वो कैंसर कभी मैनिफेस्ट नहीं करता है बिकॉज योर इम्यून सिस्टम कट्स इट ऑफ. वो कभी व्हेन द फाइट बिटवीन द इम्यून सिस्टम एंड द प्रोडक्शन ऑफ कैंसर में इम्यून सिस्टम जब हार जाता है, कैंसर रिजल्ट्स. दैट इज हाउ cancers are. So there is no point in actually finding out because that will make you negative. The best way is boost your immune status so that even if it is there, which it could be, हम इतना ज्यादा डायग्नोज कर रहे हैं और ट्रीट कर रहे हैं और एक्चुअली कुछ कर नहीं पा रहे हैं, could be a big reason for that. तो इतना ज्यादा हम ट्रीट कर नहीं पा रहे हैं and patients are actually, the mindset becomes negative right from day one, जैसे ही आपको डायग्नोज हुआ. So the best way out here is, I'll repeat again for her, is boost your immune status. अगर है भी तो वो चला जाएगा. And trust me, whatever I'm telling you is science. It's not fiction or something. We can prove it to you scientifically. डॉक्टर साहब, भी आपका नंबर मैंने शेयर कर दिया जो आपने दिया है कि सिर्फ व्हाट्सएप करें, कोई कॉल नहीं करना है. 9815099999. जी. शर्मा जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सेरिब्रम एट्रोफी. That's all is written, डॉक्टर साहब.
That's all he has written. Okay, cerebral, again the same thing which I said, simple forgetfulness से cerebral atrophy तक, जिसको एक्सट्रीम डिमेंशिया ये बोलते हैं, ये पूरा स्पेक्ट्रम है, ये पूरा स्पेक्ट्रम आपके डाइट पे डिपेंडेंट है, पूरा स्पेक्ट्रम. We can have mind a session for mind. I think it's very important because people with depression or post-COVID depression is actually setting up. I can see that. I can see that in the patient. Generally, people are depressed. Generally. So we should have a session on mind. Mind and its diseases. And what is mindfulness? So we'll show all angles of the spectrum. जी, थैंक यू डॉक्टर साहब. Cerebral atrophy भी reversible. सॉरी, बोलिए डॉक्टर. Reversible cerebral atrophy अगर टोटल है तो मालूम नहीं किस स्टेज में है, बट अर्ली सेरिब्रल एट्रोफी, मिडिल सेरिब्रल एट्रोफी रिवर्सिबल भी हो सकता है, रिवर्स किया जा सकता है, which medical science will not tell you because they don't know the ways to actually achieve that. It is doable with foods and exercise. Sorry, yes. कई लोगों ने आपका नंबर पूछा डॉक्टर साहब, और आपने जो नंबर दिया है मैंने ये शेयर कर दिया है, और डॉक्टर साहब ने बोला कि सिर्फ पे व्हाट्सएप करें, प्लीज कॉल ना करें और व्हाट्सएप करें. और ये आखिरी सवाल है डॉक्टर साहब, ये गुरदीप सिंह जी ने पूछा है. माय वाइफ इज सफरिंग फ्रॉम बैक पेन फ्रॉम लास्ट 10 years. व्हाट टू डू टू क्योर दिस? व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स फॉर द डाइट? बैक पेन का बहुत ही अच्छा ये प्रश्न पूछा है गुरदीप जी ने, एंड आई वुड लाइक टू टेक 2 minutes एंड एक्चुअली एक्सप्लेन बैक एक क्यों होता है. पीछे में स्पाइन है, स्पाइन यूं करके सीधी है, उसमें बीच में मनके हैं जिसको वर्टिब्रा कहते हैं, वर्टिब्रा के बीच में स्पॉन्ज है जो दो वर्टिब्रा को घर्षण करने से रोकता है. ज्यादातर हमारा फोकस ये होता है कि वो डिस्क कहीं निकल तो नहीं गया है. यू विल बी सरप्राइज्ड जितने लोगों को बैकएक है, सिर्फ 5% लोगों को डिस्क का प्रॉब्लम एक्चुअली होता है, बाकी 95% इज अ मस्कुलर प्रॉब्लम. इट्स कॉल्ड अ लंबैगो, क्योंकि ये मसल्स जो बैक के हैं, आपने नोटिस किया होगा हमारा जो लाइफस्टाइल है अभी, सबसे ज्यादा वल्नरेबल मसल क्या है? लोअर बैक. जिस स्टाइल में हम बैठते हैं, इसी स्टाइल में शिटपॉट पे भी बैठ जाते हैं. पहले हम नीचे बैठते थे, अब आजकल बैठते नहीं. तो लोअर बैक सभी लोगों का जो चेयर पे बैठ के काम करते हैं, फिर उसके बाद बेड पे सो जाते हैं. मैं देखता हूं यंग लोग नीचे बैठ नहीं पाते हैं, जिसको हिंदी में चूका मुका स्टाइल बोलते हैं, जो इंडियन टॉयलेट का स्टाइल है, वैसे बैठ नहीं पाते हैं. और आप नहीं बैठ पा रहे हैं तो बैक मसल्स आर डेफिशिएंट, एंड दैट इज 95% ऑफ द रीजन फॉर बैक एक. तो कोई डिस्क का प्रॉब्लम नहीं है प्लीज. It's mostly a muscular problem and it is fully curable. You have to have the right kind of exercises to do. आप नीचे बैठना धीरे धीरे, कोई जरूरी नहीं कि फर्स्ट डे आप पूरा ही बैठ जाएं, जहां तक बैठ सकें धीरे धीरे उसको वो करिए. प्लस फिगर ऑफ 8 वॉकिंग, इन्फिनिटी वॉकिंग जिसको कहते हैं, फिगर ऑफ 8 वॉकिंग करिए. बहुत से बैक एक्स वैसे चले जाते हैं, कई बार उसको सेक करने से भी जाते हैं. सो इट ऑल ये डिपेंड्स. इट कैन बी टेलर मेड टू वॉट एवर माइट नॉट बी रिक्वायरिंग ड्रग्स और सर्जरी. जी डॉक्टर साहब, आज के लिए मुझे लगता है कि हमारे क्वेश्चंस इतने ही हैं, तो इसको कुछ आपके फिनिशिंग वर्ड्स, कुछ कैसे आप सम अप करना चाहेंगे? जुबान पे अगर लगाम है तो 3 लोगों से वास्ता आपका कभी नहीं पड़ेगा. अगर खाने के लिए है तो डॉक्टर से नहीं पड़ेगा, और अगर बोलने के लिए है तो पुलिस और वकील से नहीं पड़ेगा.
और इन तीनों से वास्ता ना ही पड़े, सिर्फ जुबान पे लगाम रखना है। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच अजीत जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। एक आखिरी क्वेश्चन फिर से आ गया डॉक्टर साहब, सॉरी। एक, व्हाट इज मेडिटेशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर पांडे? मेडिटेशन इज माइंडफुलनेस, बहुत ही अच्छी चीज है। आप देखें कोई भी चीज जो आप अगर योग को आप आइए देखें, आइए, बिकॉज मेडिटेशन इज अ पार्ट ऑफ योग। योग मीन्स द जॉइनिंग, योग मतलब जॉइनिंग होता है, द जॉइनिंग ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड योग। एंड हाउ डू यू जॉइन दिस? बाय द कॉस्मिक ज्योमेट्री दैट यू मेक वाइल आप आसन करते हैं। इस कॉस्मिक ज्योमेट्री प्रोमलगेट करती है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट का मिलन हो जाए। This is the principle of yoga. Meditation is a part of it, wherein you actually balance the whole body, and the balance is from the central nervous system to the hormonal level. जो कि hormones are what? They are inter-cell communicators. जैसे हम और आप इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, सेल्स आपस में हार्मोन्स के लैंग्वेज में बात करते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो कमांड आती है सेल के लेवल तक उसको हार्मोन्स लेके पहुंचते हैं। हार्मोन्स का ये इंपॉर्टेंस है। सो मेडिटेशन एक्चुअली ये आपको अलाइन कर देता है। टू एक्सप्लेन वन मोर थिंग, जैसे आपने बचपन में सबने किया होगा, एक कागज पे मिट्टी ले लिया, नीचे एक मैग्नेट रख दिया, तो जैसे ही आपने मैग्नेट रखा, मिट्टी अपने आप को अलाइन कर लेती है इन अ पर्टिकुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न। कैसे? कैसे? दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड। सो मेडिटेशन एक्चुअली प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड जब सारे सेल्स अलाइन हो जाते हैं, एंड देन यू अलाइन टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड ब्लिसफुलनेस। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू। और ये लास्ट क्वेश्चन है मनीष शर्मा जी द्वारा, रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज पूछ लीजिए इस एपिसोड में। मेरे पिताजी को समझा नहीं पाता है, बहुत सारे डॉक्टर से बात करता हूँ रॉ फूड डॉक्टर से, लेकिन फिर भी मेरे पिताजी नहीं समझते हैं, बोलते हैं कि रॉ फूड खा खा कर कैसे जिए जी। बताइए डॉक्टर साहब, आपने बताया तो है कि बैलेंस कर सकते हैं हम। 50% कर सकते हैं। अगर कोई डिजीज है तो ये परसेंटेज वेरी करेगा, बिकॉज अगर क्योर करना है डायबिटीज, दिस परसेंटेज इज फॉर पीपल हु apparently don't have a disease, but if they have a disease, one has to balance. और ये आपके द मैंने जो मेरा लास्ट स्लाइड था, जो मैंने ये बोला भी, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि ये नहीं हो सकता है। सब पॉसिबल है। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं आपको जिंदा नहीं नजर आ रहा हूं, मेरे में कोई एनर्जी की कमी नजर आ रही है, मैं खाना बहुत कम, मैं ज्यादातर लंघन में रहता हूं, पानी वानी पे काम चलाता हूं, अफोर्ड कर सकता हूं, मैं खाता नहीं हूं। क्यों? आप आजमा के ये देख लीजिए, मेरे साथ दौड़ लीजिए, मेरे साथ पंजा लड़ा लीजिए, ताकत दिख जाएगा आपको। वो खाने से नहीं आता, खाने से कोई मतलब नहीं है ताकत की। दिस माइट साउंड वेरी अजीब सा स्टेटमेंट, ताकत कभी मसल में नहीं होती है, बाय द वे। ताकत यहां होती है, उसका खाने से कोई मतलब नहीं है। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने इतना अपना प्रेशियस टाइम हमें दिया, और लोगों के और भी सवाल आ रहे हैं, पर अभी और सवाल मैं नहीं ले पाऊंगा। अगले एपिसोड में डॉक्टर साहब हम डिस्कस करेंगे कि क्या लोग पूछना चाहते हैं। तो मैंने पोस्ट किया है कि अगर आप जो के बारे में भी डॉक्टर पांडे को वापस चाहते हैं तो प्लीज वो अपना बताइए किस बारे में बात करना चाहते हैं। सो आई विल ट्राई एंड ब्रिंग डॉक्टर पांडे अगेन। उनका टाइम थोड़ा सा कीमती होता है, और आज हमको उन्होंने बहुत ही
अपना दरिया दिली दिखा के एक घंटा और ऑलमोस्ट 30 मिनट होने वाला है डॉक्टर साहब। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू एवरीवन। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब अगेन। थैंक यू अगेन। Thank you for नमस्कार। calling me. Thank you. थैंक यू। Namaskar.